हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः. These shlokas are recorded by separating the stanza word by word for easy learning. Please share your feedback in the comment. Kindly subscribe and share to others. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Narayanaya. Shloka 4. He indeed practiced severe penance, and on the seventh day, greatly angered, threatened to cut off his head, and thus made Shiva appear before him immediately. From Shiva, the Lord of the universe, he asked for a cruel boon. Whoever's head he touched would die instantly. How can good sense come to people who are indifferent towards you? ஸ்லோகம் 4. அவன் கடுமையான தவம் செய்தான். 7வது நாளில் மிகுந்த கோபத்துடன் தன் தலையை தானே வெட்டிக் கொள்வதாக மிரட்டினான். இதனால் சிவன் உடனே அவன் முன் தோன்றினார். பிரபஞ்சத்தின் அதிபதியான சிவனிடம் அவன் ஒரு கொடூரமான வரத்தை கேட்டான். யாருடைய தலையை அவன் தொடுகிறானோ அவன் உடனடியாக இறந்து விடுவான் என்பதே அந்த வரம். உங்களைப் பற்றி கவலைப்படாதவர்களுக்கு நல்ல புத்தி எப்படி வரும்? ശ്ലോകം 4. അവൻ തീവ്രമായ തപസ് അനുഷ്ഠിച്ചു. 7ാം ദിവസം അത്യന്തം കോപത്തോടെ തന്റെ തല വെട്ടിമാറ്റുമെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തി. അതിലൂടെ ശിവൻ ഉടൻ പ്രത്യക്ഷനാകാനിടയായി. വിശ്വനാഥനായ ശിവനിൽ നിന്ന് അവൻ ഒരു ക്രൂരമായ വരം ചോദിച്ചു. താൻ തൊടുന്നവന്റെ തല ഉടൻ പൊട്ടിപ്പോകണം. നിനക്ക് വിരോധമുള്ളവർക്ക് നല്ല ബുദ്ധി എങ്ങനെ ഉണ്ടാകുമെന്ന് പറയൂ. Srimad Narayaniyam, Dashakam 89, Shloka 4. Taptah taptva ghoram, taptas taptva ghoram, taptas taptva ghoram, taptas taptva ghoram, sa khalu kupitah, sa khalu kupitah, sa khalu kupitah, saptama dine, saptama dine, saptama dine, taptas taptva ghoram, sakhalu kupitah saptama dine, taptas taptva ghoram, sakhalu kupitah saptama dine, taptas taptva ghoram, sakhalu kupitah saptama dine. Shirah chitva sadyah, shirah chitva sadyah, shiras chitva sadyah, shiras chitva sadyah, shiras chitva sadyah, puraharam upasthapya puratah, puraharam upasthapya puratah, puraharam upasthapya puratah, puraharam upasthapya puratah, shiras chitva sadyah puraharam upasthapya puratah, shiras chitva sadyah puraharam upasthapya puratah, shiras chitva sadyah puraharam upasthapya puratah. Tapas taptva ghoram sakhalu kupitah saptama dine, shiras chitva sadyah puraharam upasthapya puratah. Tapas taptva ghoram sakhalu kupitah saptama dine, shiras chitva sadyah puraharam upasthapya puratah. Tapas taptva ghoram sakhalu kupitah saptama dine, shiras chitva sadyah puraharam upasthapya puratah. Tapas taptva ghoram sakhalu kupitah saptama dine, shiras chitva sadyah puraharam upasthapya puratah. Atikshudram raudram, atikshudram raudram, atikshudram raudram, shirasi karadanena nidhanam, shirasi karadanena nidhanam, shirasi karadanena nidhanam. Atikshudram raudram, shirasi karadanena nidhanam, atikshudram raudram, shirasi karadanena nidhanam, atikshudram raudram, shirasi karadanena nidhanam.
जगन्नाथात् वव्रे जगन्नाथाद्वव्रे 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 भवति विमुखानां क्व शुभधीः भवति विमुखानां क्व शुभधीः भवति विमुखानां क्व शुभधीः जगन्नाथाद्वव्रे भवति विमुखानां क्व शुभधीः जगन्नाथाद्वव्रे भवति विमुखानां क्व शुभधीः जगन्नाथाद्वव्रे भवति विमुखानां क्व शुभधीः अतिक्षुद्रं रौद्रं शिरसि करदानेन निधनं जगन्नाथाद्वव्रे भवति विमुखानां क्व शुभधीः अतिक्षुद्रं रौद्रं शिरसि करदानेन निधनं जगन्नाथद्वव्रे भवति विमुखानां क्व शुभधीः अतिक्षुद्रं रौद्रं शिरसि करदानेन निधनं जगन्नाथाद्वव्रे भवति विमुखानां क्व शुभधीः तपस्तप्त्वा घोरं स खलु कुपितः सप्तमदिने शिरश्छित्त्वा सद्यः पुरहरमुपस्थाप्य पुरतः अतिक्षुद्रं रौद्रं शिरसि करदानेन निधनं जगन्नाथद्वव्रे भवति विमुखानां क्व शुभधीः तपस्तप्त्वा घोरं स खलु कुपितः सप्तमदिने शिरश्छित्त्वा सद्यः पुरहरमुपस्थाप्य पुरतः अतिक्षुद्रं रौद्रं शिरसि करदानेन निधनं जगन्नाथाद्वव्रे भवति विमुखानां क्व शुभधीः तपस्तप्त्वा घोरं स खलु कुपितः सप्तमदिने शिरश्छित्त्वा सद्यः पुरहरमुपस्थाप्य पुरतः अतिक्षुद्रं रौद्रं शिरसि करदानेन निधनं जगन्नाथद्वव्रे भवति विमुखानां क्व शुभधीः तपस्तप्त्वा घोरं स खलु कुपितः सप्तमदिने शिरश्छित्त्वा सद्यः पुरहरमुपस्थाप्य पुरतः अतिक्षुद्रं रौद्रं शिरसि करदानेन निधनं जगन्नाथाद्वव्रे भवति विमुखानां क्व शुभधीः तपस्तप्त्वा घोरं स खलु कुपितः सप्तमदिने शिरश्छित्त्वा सद्यः पुरहरमुपस्थाप्य पुरतः अतिक्षुद्रं रौद्रं शिरसि करदानेन निधनं जगन्नाथद्वव्रे भवति विमुखानां क्व शुभधीः तपस्तप्त्वा घोरं स खलु कुपितः सप्तमदिने शिरश्छित्त्वा सद्यः पुरहरमुपस्थाप्य पुरतः अतिक्षुद्रं रौद्रं शिरसि करदानेन निधनं जगन्नाथाद्वव्रे भवति विमुखानां क्व शुभधीः